डेफिनेशंस कवर कर रहे हैं हम आज, ठीक है। पहला ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 16 13, अक्टूबर नवंबर 16 13। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट। सवाल क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश करो बिटवीन एक्सटर्नल और इंटरनल रिक्रूटमेंट, दोनों की डेफिनेशन मेंशन करेंगे। लिखते हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज, external recruitment is when the business attracts workers from outside the organization while internal recruitment is when the workers from within the organization are identified for the vacancy available, अगला सवाल है हमारे पास, जो जॉब खाली है, वैकेंसी का मतलब जॉब खाली है, वैकेंसी अवेलेबल। सवाल है हमारे पास, डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सिंपल सा सवाल है, डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसका आंसर लिखते हैं, डिफाइन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसका आंसर लिखते हैं, दे आर द डिफरेंट स्टेजेस, सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं, दे आर द डिफरेंट स्टेजेस a product passes through, they are the different stages a product passes through from entering the market and then leaving it, यहां तक भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हम फिर भी एग्जांपल्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेजेस आर इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, maturity and decline, तो बेटा बीसीजी मैट्रिक्स है, वो A2 का पार्ट है जिसको AS में इनकॉर्पोरेट करता है, वो छोड़ दो। अगला सवाल है, डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। डिफाइन व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ऑपरेशंस की डेफिनेशन है ये, सवाल नोट डाउन कर लो अपने पास। डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, लिखते हैं इसका आंसर, it is the process in which the inputs are converted into outputs as the raw materials are processed and value PROCESSED, raw materials are processed and value is added to them, अगला पेपर है हमारे पास मई जून 17 11, यहां से भी हम सारी डेफिनेशंस देखेंगे। मई जून 17 11, पहला सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म प्राइस स्किमिंग।
Define the term price skimming. लिखते हैं आंसर. It is a pricing strategy in which the business charges the maximum possible price it can as the product may be unique or different from other competitors. प्राइस स्कीमिंग है, प्राइस पेनिट्रेशन है. हाँ, पेनिट्रेशन ये होती है कंपेटिटर से थोड़ा सा नीचे चार्ज करते हैं. कंपैरेटिव ये होती है कि बिल्कुल एग्जैक्टली कंपेटिटर के हिसाब से चार्ज करते हैं. ठीक है. साइकोलॉजिकल ये होती है कि 1000 नहीं 999. ठीक है. फिर एक डायनामिक है. ठीक है. एक दो और चीजें भी है. अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म विंडो ड्रेसिंग विद रेफरेंस टू पब्लिश अकाउंट्स. सवाल नोट डाउन कर लो. डिफाइन द टर्म विंडो ड्रेसिंग विद रेफरेंस टू पब्लिश अकाउंट्स. तो लिखते हैं इसका आंसर. इट इज the process in which the financial statements do not show the true and fair value. The financial statements do not show the true and fair value of the business as the documents are manipulated to show different results. क्योंकि पब्लिश अकाउंट्स होता है ना आपकी इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसको अपने हिसाब से दिखाना चाहिए. जरूरी नहीं है गलत दिखा. हाँ, कभी अच्छा दिखा दो, कभी बुरा दिखा दो. ठीक है. अगला सवाल लिखते हैं. टैक्स से बचने के लिए, अपना गवर्नमेंट को कम टैक्स देने के लिए. सवाल है हमारे पास, डिफाइन द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस. डिफाइन द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस. Define the term emotional intelligence. ठीक है. चलो लिखते हैं. Define the term emotional intelligence. It is the ability of the managers. It is the ability of the managers to understand and control their own emotions as well as
be aware as well as be aware what is going on in the society and deal with the workers accordingly ये क्या है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसकी 4 कॉम्पिटेंसीज है, नीचे पूछ भी रहा है, अभी लिखवा नहीं रहा मैं आपको, लेकिन 4 है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल्स भी कहते हैं और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है, दैट वी आर वेल अवेयर कि भाई मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी अपनी वीकनेसेस क्या है और मैं अपनी वीकनेसेस पे काम कर रहा हूँ। हाँ भाई, क्योंकि देखो अपने जज्बात पे काबू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप बहुत बुरे हालात में आ गए तो यू आर बेसिकली तूने हाथ पांव छोड़ दिए कि मैं तो गया। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है तुम्हें पता है कि तुम्हारी अच्छाइयां बुराइयां क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट का पता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये बुराई है, तुम उस पर कोशिश करोगे तुम्हारे काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, ताकि तुम्हारे ऊपर वो हावी ना हो जाए, तुम्हारे बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट ना करे। सोशल अवेयरनेस तुम्हें पता है कि आसपास क्या चल रहा है। सोशल स्किल्स या रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है कि तुम वर्कर्स को उस हिसाब से डील करते हो। अगला है हमारे पास मई जून 2017 1-2। मई जून 2017 1-2। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल बहुत आसान है, डिफाइन द टर्म लीडरशिप। डिफाइन द टर्म लीडरशिप। लिखते हैं इसका आंसर, डिफाइन द टर्म लीडरशिप। इसका आंसर डेवलप करते हैं। इट इज the ability of the managers. It is the ability of the managers to influence and motivate individuals to achieve a particular objective or target, full stop। अगला पार्ट पूछ रहा है 2 स्टाइल्स बता दो, तो आप ऑटोक्रेटिक भी लिख सकते हो, डेमोक्रेटिक भी लिख सकते हो, लेजी स्टाइल भी लिख सकते हो। अब आप बोल रहे हो मैनेजर में क्या फर्क है, तो देखो मैनेजर है ना, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कमांड करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन लीडर मोटिवेट करता है, लीडर इन्फ्लुएंस करता है, लीडर अथॉरिटी को इस्तेमाल किए बगैर काम करवाता है। मैनेजर अथॉरिटी से काम, मैनेजर भी लीडर हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं हर मैनेजर लीडर। एक मैनेजर लीडर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मैनेजर के अंदर लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स हो और वो लीडर हो। सही है। अगला सवाल है, हाँ स्किल है। हाँ लीडर, इनफॉर्मल लीडर्स भी तो होता है ना, जैसे ट्रेड यूनियंस हो गई, वर्कर्स हो गए, उसमें कुछ ऐसे 1-2-3 लोग होते हैं जिनकी सुनी जाती है, वो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं। अब सवाल है, डिफाइन द टर्म डेट फैक्टरिंग। डिफाइन द टर्म डेट फैक्टरिंग। लिखते हैं, इट इज an external source of finance. It is an external source of finance in which the business sells off its trade receivable. The business sells off its trade receivable to an external third party, and gets immediate payment, However, the complete amount is not recovered.
सही, ये आपका क्या था, डेट फैक्टरिंग। अगला सवाल है डिफाइन द टर्म डिमांड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लिखते हैं डिफाइन द टर्म डिमांड। लिखते हैं डिमांड इज द willingness and ability of a consumer to purchase a good or service at a given price. अब हमारे पास नया पेपर आ रहा है मई जून 17 देखते हैं इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। पहला सवाल है डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, बेसिक सी डेफिनेशन है, नहीं लिखना नहीं लिखो, बता रहा हूं सुन लो। वन लाइनर आंसर इसका आता है, सिंपल वन लाइनर, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। बस 2 मार्क मिल जाएंगे। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास डिफाइन द टर्म बफर इन्वेंट्री। तो लिखते हैं it is the minimum inventory the business holds within the business holds in case of निवेदन गलत हो जाएगा। The business holds in case of unforeseen circumstances, so the production process is not halted HALTED is not halted or stopped full stop। ये एक तरीके से एक सेफ्टी होती है जो हम अपने पास रखते हैं। अगला है डिफाइन द टर्म शेयर कैपिटल। लिखते हैं इसका आंसर, इट इज the value of the equity it is the value of the equity owned and controlled by the shareholders. It is the value of equity owned and controlled by the shareholders in limited companies. 2017 अक्टूबर नवंबर 11 इन लिमिटेड कंपनीज। अक्टूबर नवंबर 2017 11 लाइन से वापस देखते हैं, इसमें थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशंस नजर आ रही है। डिफाइन द टर्म चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिफाइन द टर्म व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अक्टूबर नवंबर 2017 11 आंसर लिखते हैं they are the different steps a product passes through from leaving the producer and reaching the end, from leaving the producer
and reaching the end consumer, and reaching the end consumer. For example, producer, wholesaler, retailer, and consumer, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफाइन द टर्म जॉब रीडिजाइन, डिफाइन द टर्म जॉब रीडिजाइन। लिखते हैं इसका आंसर, इट इज द प्रोसेस, in which the HR department brings in changes in the job description, of a particular employee, to ensure they remain interested in the organization, and are not demotivated, जॉब रिडिजाइन या काम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर काम कर रहे हो, काफी टाइम से कर करके बोर हो गए, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में चेंजेस ले आते हैं कि आप ये रिपोर्ट नहीं बनाओगे, ये वाली रिपोर्ट बनाओगे, अब आप इस जगह पे काम नहीं करोगे, उस जगह पे काम करोगे, थोड़ा बहुत। हाँ ना, बंदे का काम चेंज डिपेंड करता है ना यार, पर्सन टू पर्सन ये बात वेरी करेगी। भाई तू एक बात बताऊं तुझे, अगर तू इधर चले जाए आईबैक्स कॉल सेंटर, ये बिजनेस बीपीओ सोल्यूशन है, यहाँ पर है ना बड़े बड़े घरों के बच्चे भी आए होते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से भी उतर रहे हैं काम करने के लिए, बस काम करना है। तो बात ये भी आती है कि हर किसी के लिए पैसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं, डिफाइन द टर्म माइक्रो फाइनेंस, मेरे भाई ये हमारा लोकल जबान में और हमारे रिलीजन के हिसाब से क्या है, कर्जे हंसना। क्या है? कर्जे हंसना, बगैर सूद के कर्जा देना सोसाइटी के उन लोगों को जिनके हालात अच्छे नहीं है। जो बुक की डेफिनेशन है ना, उसमें ना होने के बराबर या बिल्कुल कम होता है, और हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। लिखते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, होता है, सैलानी देता है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं। तामीर माइक्रो फाइनेंस का, इट इज माइक्रो फाइनेंस, it is a source of finance, in which individuals from low income backgrounds are provided loans with low or no interest so they can become financially independent as commercial banks do not provide them loans as the risk is too high, सही। तो यहाँ पर हमारी ये डेफिनेशंस भी स्पेस की खत्म है।
अगला है ये वाला, अक्टूबर नवंबर 2017 1-2, अक्टूबर नवंबर 2017 1-2। पहला सवाल, डिफाइन द टर्म सोशल एंटरप्राइज, डिफाइन द टर्म सोशल एंटरप्राइज क्या है, लिखते हैं इसका आंसर, इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस, इट इज अ बिजनेस operating, it is a business operating in the private sector, in the private sector, but it does not have, but it does not have profit maximization, profit maximization as an objective, as an objective. The profit is generated, the profit is generated as an objective, full stop. The profit is generated but reinvested back into the business, back into the business to benefit the society, to benefit the society. मेरे भाई आपका जो ये बिजनेस होता है ये काम करता है ट्रिपल बॉटम लाइन पे, जिसको हम बोलते हैं सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, वरना यहाँ तक की डेफिनेशन हमारी पूरी है, मसला नहीं। अगला पार्ट हम लिख रहे हैं, डिफाइन द टर्म रिटेन्ड अर्निंग्स, डिफाइन द टर्म रिटेन्ड अर्निंग्स, लिखते हैं अक्टूबर नवंबर 2017 1-2। सवाल है डिफाइन द टर्म रिटेन अर्निंग्स, लिखते हैं इसका आंसर, इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस in which the business holds a certain amount of profit, back in the business for future financial needs, for future financial needs। बिल्कुल एंड में जो प्रॉफिट बचता है उसमें से थोड़ा सा अपने पास हिस्सा रख लेते हैं। अगला सवाल है, डिफाइन द टर्म प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, डिफाइन द टर्म प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, लिखते हैं, इट इज अ मार्केटिंग अप्रोच, it is a marketing approach which is also known as an inward approach, in which which is also known as an inward approach in which the business first develops a product and then pushes it into the market and then pushes it into the market। इसकी एग्जांपल एप्पल की ना बेटा भाई, develops a product and then pushes it into the market। यानी एप्पल अपना आईफोन जो बना रहा है अपने हिसाब से बनाता है, इनोवेशन करता है, फिर मार्केट में पुश करता है और बेचता है। कस्टमर की नीड थोड़ी थी 3 कैमरा 4 कैमरा, फिर अपने हिसाब से इनोवेशन और चेंज ला रहा है और फिर बेच रहा है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का चांस भी ज्यादा होता है। सैमसंग भी इनोवेशन पे काम कर रहा है, जिसका Z फोल्ड है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में आ जाता है। जो नीचे वाली सीरीज है वो वही कह रहा हूँ ना, वो दोनों में चल रहे हैं। उनके जो हाई एंड है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में और जो नीचे वाले वो मार्केट ओरिएंटेशन में।
इट कैन लीड टू अ यूनिक सेलिंग पॉइंट, हो सकता है। तो आज का सेशन हम यही होल्ड करते हैं।